Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcoming you all to our final lesson for the topic that we had started a couple of weeks back, named as the cash book. As we all know that we have extensively and through our sheer hard work learned what is the two-column cash book all about, and we headed in our last lessons towards the three-column cash book that is maintained for the businesses cash and bank purposes. Now, as far as the three-column cash book is concerned, we did a little practice about it. As you all can remember, you can see its format on the whiteboard as well. Remember one thing, that whatever we have practiced till yet is a standard form of question that comes up. Sometimes a question is different wherever the balance that is given for the bank is not a balance. In fact, it is an overdraft. Now, how do we record an overdraft? Let's have a look on that. Let's say it says that the drawdown balance for the cash it's 400, and for the bank it is 960 credit. Remember, whenever it is always a normal balance, it would be given debit along with the both columns, cash or bank. But whenever it is credit written with the brought down balance of the bank, remember it is an overdraft. Okay, a bank overdraft, and bank overdraft is a liability which is to be recorded on the credit side of the cash book. Why? So you all should be knowing that this is the debit side, this is the credit side. Whenever you have an overdraft balance in the bank column, remember this balance is basically a liability, and liability would always have its brought down on the credit side. अब इसका brought down कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे? Let's say 1st of January is the date. In the particulars we'll be writing down brought down balance, और बैंक के कॉलम में हम 960 लिख देंगे. फर्क क्या है पिछलों से कि this time, due to this being an overdraft, it is recorded on the credit side, और बैंक कैश का उसी तरह ये बैलेंस जो है that would be recorded on the debit side, और वो है 400. So remember, whenever there is a credit written with the bank's balance, it would always be recorded on the credit side, and this is the only new thing that we need to learn in our today's cash book. ठीक है, बाकी सारे के सारे रूल्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका जो ब्रॉडन बैलेंस है वो इस साइड पर होने के बावजूद बैंक का सीडी बैलेंस इसी साइड पर आ सकता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन a few transactions. I won't be going into much details, but मैं आपको 2-3 transactions करवा दूंगा जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. Let's say received a long-term loan from Ahmed. Okay, $2,000 by check. अब ये जो हमने अहमद से लोन लिया है, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. हमने लिया है इसको चेक की फॉर्म में, बैंक की फॉर्म में. तो एंट्री क्या होगी? द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू अहमद्स अकाउंट क्रेडिट. व्हाट इज अहमद? अहमद इज अ लाइबिलिटी, तो अहमद के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. अब यहाँ पे सिंपली एंट्री कैसे पास होगी? लेट्स से फॉर एग्जांपल द डेट वाज 5th of Jan. पर्टिकुलर्स में बिकॉज ऑफ अहमद, और बैंक आपका डेबिट हो रहा है कितने से? 2000. सिंपल एज इट कुड बी. ओके, अब लेट्स से बेयरिंग इन माइंड कैश के कॉलम को भी हम छोड़ देते हैं बिकॉज उसमें तो बिल्कुल ही कोई भी चेंजेस नहीं आते, राइट? बेयरिंग इन माइंड कि हमारी ये एक ट्रांजैक्शन हुई है, इसके अलावा चलें एक और ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं. इट सेज पेड सैलरीज $440 by check.
अब इसकी क्या डबल एंट्री होगी? द डबल एंट्री वुड बी सैलरीज अकाउंट डेबिट 440 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 440, राइट? अब इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है? लेट्स से द डेट इज 10th of January. आपका बैंक अकाउंट बिकॉज ऑफ सैलरीज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने से? 440 से। लेट्स से वी ओनली हैड दीज ट्रांजेक्शन्स। अब इसके बाद हम इसके सीडीज कैलकुलेट करते हैं। ओके, कैश का तो बिल्कुल वैसी सीडी आ जाएगा, बेयरिंग इन माइंड के इसकी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो बिल्कुल वैसे का वैसा इसका सीडी आ जाएगा, जिस तरह एक नॉर्मल लेजर में होता है कि जब उसकी एक साइड पे कोई फिगर नहीं होती तो उतनी ही फिगर उसकी दूसरी साइड पर सीडी बैलेंस आ जाता है। अब यहाँ पर दिस डेबिट इज द हायर साइड और इसका टोटल कितना है? 2000 वो हम दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड करेंगे और इस 2000 में से हम इस साइड का जो टोटल है जो कि बनता है 1400 वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 600 आपका सीडी बैलेंस आ रहा है। अब वी कैन सी कि एट द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ द बैलेंस वाज क्रेडिट था, जिसकी वजह से उसको लाइबिलिटी कंसिडर करके इस साइड पे उतारा था। लेकिन अगेन हमारे पास इस बार डेबिट्स ज्यादा आ गए हैं, तो अगेन हमारा एक नॉर्मल बैलेंस आया। इसका मतलब जब अगले साल हमारी कैश बुक बनेगी तो ये बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर ही रिकॉर्ड होगा, ये क्रेडिट साइड पर नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ एन ओवरड्राफ्ट कैन चेंज इनटू अ नॉर्मल बैलेंस एज वेल इन अ बैंक अकाउंट। ठीक है क्लास? तो दिस वाज द ओनली थिंग that was left over to be studied relevant to the cash book. Till yet, we are done with most part of our syllabus. In fact, 100% of our syllabus that was planned for the second term. And as per the schedule of the online classes, now what we are heading towards is that whatever topics we have studied in the second term of this session, we need to revise them. और उनको revise करने के लिए I am planning some more lessons. I'll be uploading those video lessons in the upcoming weeks along with some practice worksheets. उससे ये होगा कि आप लोग at least जो हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा हमने ऑन कैंपस पढ़ा था, फिर थोड़ा सा हमने ऑनलाइन पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपकी री इन्फोर्स हो जाएंगी, वो आपकी रिवाइज हो जाएंगी, right? Remember one thing, that accounting is more about regular practice. It is more about consistent efforts. It is more about, once again, about continuous practice. The more you practice in accounting, more chances are there for you to excel in that subject. So don't take these words lightly. Do practice it whenever you have a chance. And in case of any queries, you can get back to me for any of your problems. Until next time, it's a very goodbye from my side. I'll see you in the next lesson. Thank you very much.